had mentioned that I was not looking to short, considering the last candle closed above 18,600 and did not really want a long on at open, so did not really trade. Bank Nifty again, this was a very good reference point, 280,290. So candle closing above, didn't really want a long here. Of course, it came back and was around these levels till it gave you an up move. Also shared a system trade around these levels, which was where I was long on Bank Nifty. So I had mentioned if 140 till 145 300 breaks, we'll look for a long above 145. Stop loss 280. First target which was mentioned in the video was 44,410, which also was achieved. The only problem is I was frankly not expecting 145 to be at VWAP. Was expecting it to be near around 320 330 levels, and hence the RR was probably would have been better. But in this case, I think just give 50 points, and you can't really expect to catch the top in this case. So my trail stop loss got hit and didn't really make much money. What will I do tomorrow? Still the Bank Nifty looks good in terms of closing, and Nifty also looks good. So we'll only look for shorts if Nifty 1 closes below 695, and we'll look for shorting opportunities then. Till then I'm not looking for shorting opportunities. Thank you. मैंने कल वीडियो में बोला था कि मैं शॉर्ट नहीं करूँगा क्योंकि 1 आवर क्लोज 18,600 के ऊपर हुआ था, तो ये शॉर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पर मुझे लॉन्ग नहीं करना था यहाँ पर इस कैंडल पे, तो सुबह 1 आवर पे मैंने कुछ नहीं किया. बैंक निफ्टी अगर आप वापस देखें तो 44,290 जो मैं लास्ट 2 दिन से बोल रहा हूँ वीडियोज़ में, एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट था. कल मंडे को उसने लॉन्ग दिया, कल उसने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी, आज फिर उसने एक लॉन्ग दिया. तो सिस्टम ट्रेड में भी मैंने लॉन्ग दिया था बैंक निफ्टी. मैंने बोला था 145 तक अगर 300 टूटता है तो 145 के ऊपर बाई करूँगा. टारगेट भी मैंने मेंशन किया था पहला, जो कि अचीव हो गया. 44,410 बोला था मैंने. अब 2 प्रॉब्लम थे इसमें RR अच्छा नहीं था, क्योंकि फ्रैंकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डे हाई टूटने का, तो मैं ट्रेल कर रहा था स्टॉप लॉस जो हिट हो गया. और दूसरा चीज़ ये 145 के क्लोज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था VWAP के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर बाय था. तो यहाँ पर 40-50 पॉइंट्स ही मिलता है सिर्फ, पर ठीक है. अब कल क्या करूँगा मैं? अब मैं ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, मैं इसको शॉर्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ अभी. जब तक 695 के नीचे स्पॉट क्लोजिंग नहीं होती और एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी तो शॉर्ट करने के लिए. देखते हैं, कल RBI पॉलिसी है 10 o'clock, देखते हैं क्या होता है. थैंक यू.